Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 29th of January. The first topic, or first news is NeoCov coronavirus found in bats. We'll see and understand the repercussion that it can have to humanity or mankind, even humans में किस तरह से इसकी impact होगी. Second, India willing to talk to Pakistan on pilgrimage flights. So both countries looking forward to start the spiritual places or the pilgrimage places that can be reached to the citizen. Third, Google invest 1 billion in Airtel. We'll see how this is going to impact the 5G services in our country. The second last is China to build space center and satellite for Pakistan. And the last is an editorial from Indian Express, the youngest learner. We'll understand this particular editorial in detail. Apart from this, at the end of this video, there would be some MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we have launched our app. This is the newest version of app 2.0. You can download this. मैंने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. दिस विल गिव यू अ लॉट मोर फैसिलिटीज लाइक वीडियो ब्लॉग्स A to Z स्टडी मटेरियल्स एंड डेली MCQs. Starting with the first news analysis of the day, that is NeoCov coronavirus found in bat. This particular news is important for General Studies paper 2, issues related to development and management of health. So what has happened? That a study was conducted by the Chinese researcher जो वहाँ की Wuhan Institute of Virology में उन्होंने research किया, and they found that a new type of coronavirus, its name is NeoCov, that spread among the bats in the southern Africa. So this is a new kind of virus that was found only in the bats and the region where it was found in South Africa, right? This can pose a threat to human in future. This is what the expert has to say. अगर mutations होती हैं इनमें ज़्यादा तो human में भी ये basically आ सकती है. And you know, China people mostly eat bats also. So this is another level of questions that is arising whether it can come from animals to human. So in future इस तरह की projections की गई है that this particular family virus, that is NeoCov, एक जो कोरोना वायरस की family की वायरस है, वो वापस से human में भी आ सकती है. The World Health Organization has said that the NeoCov coronavirus need to be further studied. इसमें और detail अभी analysis की ज़रूरत है. There need to be more research that has to be done to understand its interference with the human. And coronavirus are the large family. अगर बात करें कुछ वायरसेस की जो अभी रिसेंट में आई है, कोविड है, राइट, उसके वेरिएंट है ओमिक्रॉन, डेल्टा, ये सारे वेरिएंट्स हैं. और इवन द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको सार्स और मियर्स कहते हैं, ये सारे कोरोना वायरस जो फैमिली हैं उनके ही वायरस हैं. इवन द कॉमन कोल्ड दैट इज देयर दैट एग्जिस्ट टिल डेट इज अ कोरोना वायरस फैमिली. तो ये कोरोना की फैमिली है जिसके अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस होते हैं और लिथैलिटी उसके अकॉर्डिंगली वेरी करती है. Now, what is NeoCov? If you see, NeoCov is like this was found in the bat initially. South Africa के regions है वहाँ पे पाई गई है, and this was first identified in 2011, right? And it was identified as a species known as Neurocomica, which was named as NeoCov, derived from a particular animal. और NeoCov की अगर बात करें, दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स जो कि 2012 में सऊदी अरेबिया में फर्स्ट आइडेंटिफाई की गई थी. सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी वायरस हैज इट्स म्यूटेशंस, उसके बाद जो उसकी लिथैलिटी है वो चेंज होती है, उसके जो इम्पैक्ट्स है ह्यूमन बॉडी में वो कुछ म्यूटेशंस के बाद ही चेंज कर पाते हैं. ना NeoCov has been related to the Middle East respiratory syndromes of the coronavirus. SARS और MERS दोनों coronavirus family के ही viruses हैं. Now, NeoCov coronavirus is known to be 85% similar to MERS coronavirus that infect animals. So these are the level of similarity. Some points might be important for your prelims examination here. Now, NeoCov की infections की अगर बात करें humans में, it is important to note that it is inherited. And even NeoCov cannot interact with the human receptor directly, right? तो ये imply की जा रही है that the current virus form cannot infect human directly,
But again, if mutation is there, even it is being, if the man eats bats and other sort of stuff which carries this particular virus, it can come to human. Now NeoCov does not infect human and yet does not cause any death. तो अभी तक इस स्टडीज में ये पाया गया है जो चाइना ने की है कि अभी इसमें कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है. Now, Middle East Respiratory Syndrome of Coronavirus. So it actually identified in 2012, जहाँ पे ये देखा गया that it was transferred to human through a dormitory camel zoonosis. So because in Middle East people prefer to eat camel meat also. So the reason being, we have seen that this particular virus, that is Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, was directly infecting the human being there. And since the identifications, जो NeoCov है, has been identified over 2000 people, it has infected actually, और मिडिल ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया के रीजन में इनकी इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखी. Now the case fatality of MERS is estimated by WHO, which is around 35%. So this is a fatality rate, इसमें mortality rate भी है, and with death were reported. Now other news, that is India willing to talk to Pakistan on pilgrimages flight. We'll see the importance of this gender studies, like this is important for gender studies paper 2, India and neighborhood relation. तो किस तरह से इंडिया की जो pilgrimages हैं और जो places हैं उनको कैसे एक लेवल पे enhance की जा सकती है, and this coordination would help both countries to establish a good relationship. So recently, India said that it is ready to discuss with Pakistan to how expand the religious signs हैं, जो pilgrim pages हैं, वो दोनों areas में किस तरह से boost हो सकते हैं, उनकी connectivity को कैसे boost किया जा सकता है. And under the protocol of 1974 between India and Pakistan, these country thought that yes, that जो religious places है that would be facilitated on a regular basis. तो पाकिस्तान ने कहा है इसी प्रोटोकॉल को कंटिन्यूएशन करते हुए अभी भी रिसेंट टाइम में हमें एक एग्रीमेंट करने की जरूरत है. सो द पिच हैज बीन मेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया हैज आल्सो गिवन warm welcome to this. Let's see how things is going to process. Now this is an interest from both sides to expand the agreed list on the shrine model of travel. Now proposal was kept was basically deployed, or you can say presented by the Pakistan government. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजी थी जहाँ पे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल जो है उन्होंने अलाउ किया है 170 पिलग्रिम को कि वो डायरेक्टली कराची से लाहौर वर्शिप के लिए आ सकते हैं फ्रॉम इंडिया. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ कन्फर्म एंड इट हैज़ होप्ड कि जो सिक्योर क्लियरेंसेज हैं वो भी दी जाएगी, क्योंकि इंडिया ये भी चाहती है कि उस जो रीजन से पाकिस्तान के रूट से अफगानिस्तान में जो असिस्टेंस देनी है उसके लिए भी लैंड रूट पाकिस्तान प्रोवाइड करे. Now the new proposal sent by the PHC, that is the Pakistan Hindu Council, they have called the pilgrim flight to reach the country and it can give push to the faith tourism initiative, right? तो एक पाकिस्तान की तरफ से या फिर you can say the Pakistan Hindu Council के जो अपनी एक इनिशिएटिव है faith tourism हिंदू, उसको प्रोनाउंस करने के लिए या फिर उसको प्रमोट करने के लिए ये काफ़ी एक important initiatives हो सकती है. Now delay due to COVID-19 restrictions, we have seen that government has hoped कि अभी जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें सारी चीज़ें बेसिकली दे वुड बी टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड सम डिसीजन वुड बी टेकन आफ्टर द थिंग्स आर इम्प्रूविंग. एंड इंडिया हैज स्टेटेड दैट इट होप्स टू फैसिलिटेट अर्ली एक्सचेंज ऑफ विजिट्स, जहाँ पे जो इनिशियल लेवल की जो क्लियरेंसेज है वो तभी दी जाएगी जब दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस कम होगी और केसेस कम रिपोर्ट किए जाएंगे. एंड इंडिया हैज कन्फर्म्ड द पोजीशंस टू पाकिस्तान थ्रू फॉर्मल चैनल एज वेल, and both sides could meet next week to decide how the things would be processed. So this is a right decision on right direction. Let's see how the both countries coming together to just accelerate the pilgrimages process that can be continued between India and Pakistan. Now Afghanistan aid issues पे भी इंडिया ने डिस्कस किया. जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो स्पोक पर्सन है, दे हैव सेड दैट इंडिया वांट कि जो पाकिस्तान के रूट लैंड रूट को यूज़ करके असिस्टेंस देनी है अफगानिस्तान को, उसके लिए प्रपोजल रखी गई. ऑलमोस्ट 5 लाख टन ऑफ वीट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, और पाकिस्तान ने इसके लिए परमिशंस फॉर्मली दी है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था. But India would said this, and India has also said 5.6 ton of vaccines assistance to Kabul via flight. So if land route is accessible, it will make more things to reach to the Afghanistan, जहाँ पे reachability अच्छी होगी और ज़्यादा बल्क में भी उनको assistance दी जा सकती है. But what Pakistan has said, they have want
जो वीट की बात की थी इंडिया ने, वहाँ पाकिस्तान ने कहा था कि आप वीट अपना दे, बट जो ट्रक होगी वो हमारी होगी, राइट? सो दिस इज व्हाट द पाकिस्तान हैज asked India, but India said, okay, no worries, we'll be using the port areas or flight to make sure कि हम ये सारे assistance अफगानिस्तान को दे रहे हैं. Now, Google invest 1 billion in Airtel. This something is important for General Studies Paper 3, India economy and issues related to planning, mobilization, growth, and development. So the Google has recently announced that they would be investing around 1 billion in Bharti Airtel. This is Airtel company, the telecom company. और ये दोनों मिलके काम करेंगे where they would be offering a range of Android enabled services to consumers at affordable price, right? Jio के साथ भी recently Google has planned to launch a smartphone. We'll discuss that also. So this include the investment of 700 million in equity जो कि भारती एयरटेल में गूगल करेगी और उनको उसके एवज पे 1.2% की स्टेक दी जाएगी भारती एयरटेल की, राइट? एंड अप टू 300 मिलियन टुवर्ड्स द मल्टी ईयर कमर्शियल एग्रीमेंट्स. Now, कुछ ऐसे और इन्वेस्टमेंट जो कि गूगल ने इंडिया में की हुई है, so this is again important for you. So in addition to the investment to the Airtel, Google has also investment in the telecom company. That is उनके जो rival है Reliance Jio पे उन्होंने already investment की है. That is around 4.5 billion, right? So this is a huge amount that Google is investing in India, especially in the telecom sectors. And further, Google has backed dozen of startups that will accelerate the program in our country. If you see India's big beats, अगर major tech giants की बात करें या tech deals की बात करें that took place, so Google was among the first. The total investment of Google in India is around $10 billion. Facebook as around 5.7 billion. उसके बाद Amazon $1 billion पे और Netflix की 0.4 billion की investment है इंडिया में. नाउ एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इस डील के जो कि गूगल और एयरटेल ने टाई अप की है. सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू पार्ट ऑफ इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड और खास करके जो डिजिटल इंडिया की प्रमोशंस है उनमें भी हेल्प मिलेगी. एंड द इन्वेस्टमेंट वुड ब्रिंग अ लॉट मोर कॉर्पस इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट जहाँ पे म्यूचुअली ये फीजिबल होगी कि एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के लिए पब्लिक को इवन द सिटीजन कुड गेट द बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट टेक कम्पिटेटिव सर्विसेज दैट दे कैन प्रोवाइड. And as a part of commercial agreement, Airtel and Google would also come together to extensive offering जहाँ पे Android based जो device होंगे उनके लिए एक innovative affordable programs भी लेकर के आएंगे. Now, what more the benefit would be? The company said that it would work to explore the opportunities जहाँ पे जो barriers हैं स्मार्टफोन के रेंज को लेकर के, पॉइंट्स को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के, इवन ऑल अदर डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स दैट वुड बी देयर. सो डेफिनेटली दिस वुड हेल्प जियो एंड एयरटेल टू मेक सम अफोर्डेबल प्राइस ऑफ स्मार्टफोन. नोटेबली जियो ने अभी पार्टनरशिप किया गूगल के साथ लास्ट ईयर जहाँ पे इन्होंने कहा दैट दे वुड बी लॉन्चिंग अफोर्डेबल 4G डिवाइसेस विच वुड मेक पीपल to get access and reachability to the 4G services in our country. Now, China to build space satellite and space center for Pakistan. This particular news is important for General Studies Paper 2, effect of policies and politics for developed and developing countries. So, China ने recently एक announcement की है जहाँ पे उन्होंने कहा that they would be boosting the space cooperation with Pakistan, including the development of space centers and launching of more satellite for the weather alike. Now, China is currently building its own space station as well, जहाँ पे exactly ये expect की जा रही है कि आने वाले टाइम में चाइना अपने space sectors को काफ़ी ज़्यादा expand करने की कोशिश कर रहा है. Now, China-Pakistan cooperations की अगर बात करें, especially in 2018, what has happened? That China helped Pakistan to launch 2 satellites, which were 2 satellites. The first was Pakistan first optimal remote sensing satellite. This was PRSS1. उसके बाद जो दूसरी satellite की गई थी, that is Small Observation Craft PKTS-1A. So these were the 2 satellites that was launched with the help of China when Pakistan has actually launched these 2 satellites, right? तो इसके launching में सारे efforts, logistic, technical सारे supports China ने किए थे पाकिस्तान को. And in 2019, the two countries signed up agreement on the space exploration where they phase out the new science cooperations between the close allies. And China would have also advanced the construction and application for BRICS nation also. उन्होंने BRICS nation को भी help किए. BRICS nation include Brazil, Russia, India, China and South Africa. जहाँ पे जो remote sensing satellite है या फिर जो उनकी constellations हैं उसमें भी चाइना ने काफ़ी हद तक help किया. Now, चाइना की जो white paper है, what does it says? According to China's white paper, it says that this will give priority to the communication satellite for Pakistan
एंड दे वुड bring कंस्ट्रक्शंस, वहाँ पे जो पाकिस्तान के स्पेस सेंटर्स है उनकी कंस्ट्रक्शंस में भी पाकिस्तान को मदद की जाएगी चाइना की तरफ से. And China will compete in the orbit delivery of Pakistan remote sensing satellites, Venezuela remote sensing satellite, Sudan remote sensing satellite और जो अल्जीरियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सारी चीज़ों में भी जो ऑर्बिट डिलीवरी है वो पार्ट में चाइना वुड बी हेल्पिंग टू दीज ऑल अदर कंट्रीज. And China has also provided satellite launching services to countries like Saudi Arabia, Pakistan, Brazil, and Canada and Luxembourg. So these are the countries that were actually benefited. Now, the white paper that was released by China that come up with a 5-year plan where they said that the development would continue for the space gravitational and wave detections and advanced space wave solar observations. Now, China has also conducted space productions which is linked to the country like Russia, Ukraine, Belarus, Argentina, Pakistan, and Nigeria. Now, the youngest learner, this is an article from the Hindu. Basically, this is an article from Indian Express. This particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it, Design and Implementations. So what I'm going to discuss under this editorial, there will be 3 important subtopics. First is early childhood care and education. Second, early age challenges and some intervention that is required. So the entire theme of this editorial talks about the Anganwadi management and child care center and its educations. Now moving to the detail of this editorial, according to the National Education Policy 2020, it was rightly highlighted कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द CSE, दैट इज कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. So this 3 point is very important. For any child, there's a 3 kind of development that take place. First is cognitive, social and emotional. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये हाईलाइट की गई है कि ये सारी चीज़ों की जो डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, राइट. हाउएवर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज कमिंग विथ रिगार्ड्स टू द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, जो NFHS 5 की सर्वे. इट सेज दैट only 13.6% of the children are enrolled in pre-primary schools. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 86.4% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि जिसकी इनरोलमेंट प्री प्राइमरी स्कूल्स पे नहीं होती है. नाउ टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हाउ दिस गो, ओनली 1.4 million Anganwadis are there for the integrated child development services scheme. It's a good scheme that is working for the rural area, but India must provide जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट की एजुकेशन की बात करें, वहाँ पे लो इनकम हाउस होल्ड की जो रीचेबिलिटी है वो अभी भी काफ़ी कम है. इवन ओवर राइडिंग फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सो दैट जो आंगनवाड़ी में जो लोवेस्ट हिरार्की पे जो काम करते हैं, द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल कैन हैव ऑल्सो एक्सेस टू द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. Now, multiple administrative duties हैं that have left Anganwadi's worker with time with regards to ECC, that is early childhood care and education. Now, अगर बात करें अर्ली एज लर्निंग चैलेंजेस की, क्या कैसी चैलेंजेस है जो फेस की जाती है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ बेस्ट सर्विसेज फॉर दिस एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 दैट इग्नोर द इन्फेंट्स एंड टोटोलर्स. जो ऐसे बच्चे हैं खास करके इस एज ग्रुप के, इनको अभी भी ये तवज्जो नहीं दी जा रही है. एंड गवर्नमेंट, इवन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, द पेरेंट्स आर नॉट फोकसिंग टू मेक श्योर कि ये बच्चे इस तरह से लर्निंग प्रोसेस के पार्ट बने. एंड अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग हैज बिगन at a birth, जहाँ पे stimulations play an interaction role in terms of non-verbal learning and verbal communications. Now, the learning process gradually increase through observations, cues, immediate जो options होते हैं, खास करके जो environmental learning होती है, जो structure learning है, वो भी उनको नहीं मिल पाती. Unfortunately, the lack of parental awareness, which is compounding the stress and the poverty, जो distress है household में, उसकी वजह से भी जो learning process है वो घर में impact होती है. And the right age of the child to get education of 3 to 6 has been severely impacted. Some educationists ने ये suggest किया है that high workload of the Anganwadis and even the Anganwadis would remain as a non-starter. So अगर आंगनवाड़ीज वर्कर को अभी से स्टिमुलेट ना किया जाए, even the coordination is not there, so it will be not possible and not feasible to just come up with the challenge that is being existing with this age group of 3 to 6. Now कुछ ऐसे interventions that would be mandatorily required from the government and other stakeholders. So जितने भी primary schools हैं that need to open up a pre-primary schools जहाँ पे आंगनवाड़ीज
खुद से 3 से जो 0 to 3 years के ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए स्कूलिंग की कुछ ऐसी प्रोविजंस हो. इट वुड रिक्वायर अ मैसिव आउटले जहाँ पे क्लासरूम की डेवलपमेंट हो सकती है, एंड इवन जो एडिशनल आउटले है दैट कैन बी गिवन अराउंड 30,000 crores. सो दिस वुड मेक पॉसिबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किए जा सकते हैं. A meaningful early childhood care will also program जहाँ पे आंगनवाड़ीज would provide more intelligent and cost-effective services feasible through the 7 concentrated actions. तो कौन कौन ऐसे 7 concentrated actions हैं? I'll discuss everything one by one. First, that is needed जो डिज़ाइन है और जो मीनिंगफुल एक्टिविटी है एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए दैट नीड टू रिकॉग्नाइज द ग्राउंड रियलिटीज़ और उसके हिसाब से उसी कंटेक्स्ट में लोकल कंटेक्स्ट में काम करने की जरूरत है एंड लोकल सेटिंग में काम करने की जरूरत है. द सेकंड वुड बी दैट आंगनवाड़ी वर्कर्स कैन रिड्यूस द नॉन ICD वर्क. बेसिकली दीज आंगनवाड़ी वर्कर वेर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर सर्वेज एंड अदर पार्ट, सो दिस नीड टू बी रिमूव्ड ऑल टुगेदर. उनको सिर्फ डेडिकेटली जो बच्चों के ICDS के जो सेंटर्स हैं जिनके लिए उनको लाया गया सिर्फ वही काम पे डेडिकेटेड रखें. थर्ड, मैनेजिंग द आवर. दिस कैन बी एक्सटेंडेड. जो वर्क आवर एलोकेशंस की गई हैं उनको उनकी वर्क आवर को इंक्रीज की जाए एंड एक्चुअली दे शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द रेम्यूनरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. Now, ICDF need to change the policy mindset where center and the state government is prioritizing monitoring of the ECC. राइट, जहाँ पे अगर बात करें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए इसको भी मॉनिटर करने की जरूरत है एट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. फिफ्थ, आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट बी रीओरिएंटेड क्लोजली टुवर्ड्स engage the parents. See, parents' role is very important when it's come to child development. Their cooperations and their involvement is also which is playing a significant role for the cognitive development of a child. Sixth, that it must have a age appropriate activities जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो इनकरेज कर सकते हैं लिबरल मैनर में या फिर दैट लोकल सेटिंग विच इज देयर दैट कैन हेल्प देम टू प्रोग्रेस द माइंड एंड इवन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. फाइनली दिस स्टेज वुड ऑल्सो हेल्प इन रिसर्च ट्रेनिंग सपोर्ट एजुकेशन एंड ये इंश्योर करेगी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम है दैट हैज नॉट down extended the school education, right? So school education parallelly has to go with the preschooling that can be providing the cognitive, social and emotional development of a child. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question also, the correct option is C. Today's MCQ, the Technology and Innovation Report 2021 is released by the United Nations Conference on Trade and Development, Economist Intelligence Unit, World Economic Forum, and Global Entrepreneurship and Development Institute. So what you need to do, you have to check the correct options और इस तरह के जितने भी important report और index हैं उनके बारे में आपको पता करना है. Now the Food Waste Index Report 2021 is released by UNDP, International Food Policy Research Institute, Work Free Education or Foundations, and New Economics Foundations. So do check it out. Which among the following is the correct options or answers? I will discuss the correct answer in the next session of the video. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.